टू अन ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पैटर्न्स के एडवांस क्वेश्चंस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो थे पैटर्न के थोड़े इजी क्वेश्चंस। ओके, बट टुडे वी विल बी सॉल्विंग दी toughest questions of the pattern designing. Okay, and this is the अगर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर ली तो वी विल बी यू कैन से वी विल मास्टर द दिस पैटर्न। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है एंड यू हैव प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे, देन श्योरली यू विल बी एबल टू सॉल्व। यू कैन लिटिल बिट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, बट अगर आपने बिल्कुल ही नहीं करा हो, आप सीधे ये वीडियो देखने आ रहे हो, तो इट विल बी काइंड ऑफ टफ फॉर यू। सो इट्स आई विल प्रेफर यू कि आप जाके पहले फर्स्ट वीडियोस देखें पैटर्न की, इजी क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ओके, तो let me open notepad also. Okay, fine. ओके, स्टार्ट करते हैं फिर आज का। तो अभी आप देख पा रहे हो ये जो पैटर्न है। ओके, फाइन, स्टार स्टार। ओके, स्टार स्टार। मैं लेट मी ड्रॉ टू ऑन माई नोटपैड ऑन माई कॉपी। ओके, अभी मेरे पास नोटपैड आईपैड नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता आईपैड पे सॉल्व करके जो मैं टेक्निक परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं नोटपैड पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो लेट मी ड्रॉ इट ऑन माई कॉपी। आप भी ड्रॉ कर सकते हो। 2 3 4 5 6 7 8 स्टार, देन 2 स्टार एंड 6, 1 2 3 4 5 6 स्टार, देन 3 स्टार एंड 1 2 3 4 स्पेसेस, देन 4 स्टार एंड 2 स्पेसेस, एंड देन लास्टली 10 स्टार्स। ओके, तो इसमें n की वैल्यू 5 है। ओके, तो अगर हम स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को करने। ओके, तो रो कितनी है, रो, और उसके बाद इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। ओके, जो बीच का ब्लैंक प्रिंट करेंगे और फिर उसके बाद ट्राइंगल्स को प्रिंट करेंगे। ओके, जो हमारे स्टार्स हैं उनको प्रिंट करेंगे। तो एक में 5 होंगे, एक में 5 होंगे। ओके, और बीच का ब्लैंक। तो स्टार्ट करते हैं। पहले रो, फर्स्ट स्टार, स्पेस एंड सेकेंड स्टार। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रो जब 1 है तो स्टार की वैल्यू 1 है और स्पेस कितने हैं, 8। ओके, फाइन, हाँ, और स्पेस कितने हैं, 1, स्टार कितना है, 1। फिर सेकेंड रो है तो 2 स्टार, स्पेस 6 और 2 स्टार। थर्ड में 3 स्टार, 4 स्पेस, 3 स्टार। चौथे में 2 4, स्पेस 2, स्टार 2, और सेकेंड स्टार 4 है। पाँचवें में 5 0 और 5। तो अब देखते हैं। ओके, तो जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट को क्या बोल सकते हैं हम, फर्स्ट को जितने रोज हैं उतने ही हमारे स्टार्स हैं, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि फर्स्ट इक्वल टू जस्ट रो, राइट। और वैसे ही जो थर्ड है अपना सेकंड स्टार है वो भी इक्वल टू रो ही है। ठीक है, अब आते हैं स्पेस पे। जो सेकेंड स्पेस है, स्पेस में क्या हम हो सकता है कि हम बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट प्लस स्पेस प्लस सेकेंड इक्वल टू, एन की वैल्यू है कितनी,
एन की वैल्यू है 5, तो 2 इंटू एन बोल सकते हो। हाँ बोल सकते हैं। फर्स्ट की वैल्यू कैसी 2 थी, राइट। प्लस स्पेस प्लस 2 इज इक्वल टू 2n। तो स्पेस कितना हुआ 2n माइनस 2 2n-2 हो गया बस। अब इसी को जो हमने लिखा है ये, इसी को हमें बस अब सॉल्व करना है ना, दिखाना है बस। ओके, ये कैसे है, स्कैनर एस सी इक्वल टू स्कैनर सिस्टम डॉट ये बस थोड़ा मैथ्स है बस, और कुछ नहीं है। इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट रो इक्वल टू 0, रो लेस देन इक्वल टू एन, रो प्लस प्लस। अब पहले स्टेटमेंट करते हैं। फॉर इंट कॉलम इक्वल टू इट विल स्टार्ट विद 1, ओके, नॉट विद 0। वैसे कॉलम विल स्टार्ट विद 1, कॉलम लेस देन इक्वल टू रो, रो थी वैल्यू, राइट। तो कॉलम प्लस प्लस इससे भी। हेलो। हम्म, ठीक, ओके। कहाँ पे कर देते हैं? अच्छा, अभी हम चलेंगे, है ना। ठीक, ओके, श्योर श्योर, ओके, ओके। Then we have to print system dot out dot print star, right, star. Then for int column is equal to 1, column less than equal to 2 into n minus 2 into row, column plus plus system dot out dot print space, we have to print, right। जो मैंने आपको नोटपैड पे दिखाया था सेम टू सेम वही कर रहा हूँ, मुझे अलग से कुछ नहीं कर रहा। int column is equal to 1, column less than equal to row, column plus plus सेम बेसिकली मैंने यही किया है, इसको कॉपी पेस्ट में आता है। ओके, एंड देन लास्ट नेक्स्ट टाइम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, या इट इज वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, अब थोड़ा इस बार डिफरेंट क्वेश्चन है, बट सेम जो हमने अभी सॉल्व किया उसका उल्टा। ओके, ओके, तो ये भी मैं लेट मी ड्रॉ इट, ओके, ऑन माय, और लेट्स सॉल्व इट विद यू गाइस। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा जो अपना यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, फिर सेकंड पार्ट होगा स्पेस होगा, और थर्ड पार्ट होगा अपना बाहर का शेप। ओके, जब रो 1 है तो कितने स्टार हैं, 5 स्टार हैं, राइट। और स्पेस कितने हैं, स्पेस है अपने
ज़ीरो, और ये है 5। सेकेंड है तो ये 4 हो गए, स्पेस 2 हो गई, और ये वापस 4 हो गए। ये 3 है तो ये हो गए 3, ये हो गए 4, ये हो गए 3। 4 है तो स्टार कितने हो गए? स्टार हो गए, 2 स्टार हो गए, ये 6 स्पेस 6 हो गई, और ये भी 4 2 हो गए। 5 है तो 1 स्टार, और ये कितना है अपना 8, ये कितना है 1। तो बेसिकली स्टार की वैल्यू क्या है? हम बोल सकते हैं n प्लस वन, n प्लस वन माइनस वन। ओके, तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज माइनस रो। देखो n की वैल्यू 5 है, 5 प्लस वन 6, 6 माइनस रो क्या है 1, तो क्या 5 हुआ। इसमें n की वैल्यू 5 है, 5 प्लस वन 6 माइनस 2 रो 4 हो गया। ओके, अब आते हैं वैल्यू कैलकुलेट करते हैं स्पेस की वैल्यू। ओके, स्पेस वैल्यू करोगे, आप देख पाओगे जैसे इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली स्पेस है, कुछ आपको दिख रहा है कुछ? हम इसमें चेक कर पा रहे हैं कि हमेशा फर्स्ट सेकेंड और स्पेस की वैल्यू, बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि स्पेस प्लस रो वन प्लस रो सॉरी प्लस स्टार इज इक्वल टू ऑलवेज n, राइट। 5 प्लस 0 प्लस 5 10, 4 प्लस 2 प्लस 4 10। तो स्पेस की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू n माइनस, ये हम इस साइड ले जाएंगे दोनों स्टार को, n माइनस, तो क्या कहते हैं 2 इंटू, दो बार है ना, n प्लस वन माइनस रो, ये बोल सकते हैं हम। तो n माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2n माइनस टू आर। तो n की वैल्यू n माइनस n माइनस टू आर, ये बैठता है, करेक्ट है, राइट। तो इसी को हम बस अब दो करते हैं। चलिए ये आ रही है वैल्यू माइनस सी, करते हैं यहाँ पे, और दूसरी वैल्यू क्या थी, n प्लस वन, करते हैं सर। greater, okay, fine. So for int row is equal to 1, row is less than equal to n, row plus plus. Then for int column is equal to 1, column less than equal to, कितना था हमारा पहले, n प्लस वन माइनस रो, राइट, स्टार प्रिंट करते हैं, कॉलम प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार। ओके, तो अब ये भी थर्ड भी यही था। अब सेकंड पे आते हैं, कॉलम, इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, क्या निकली है, माइनस n माइनस टू आर। ओके, n 5 होगा, n माइनस 2 आर। ओके, आई थिंक नेगेटिव में चलेगा, लेट बी सॉल्व इट। क्या था, स्पेस इज इक्वल टू n, n स्टार स्पेस प्लस स्टार इक्वल टू
ओके इक्वल टू 2n राइट, 2n, तो ये 2n होगा हमेशा, तो ये 2n कट जाएगा, तो ये होगा -2, -2 -2 देखिए तो ये नेगेटिव में आएगा, इसी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ करी है शायद से, मुझे लग रहा है ऐसा। n+1 -हो राइट, n+1 -हो, तो 2n 2n -2 -r, ओके, तो क्या हो गया, -2n -2, ये प्लस हो जाएगा राइट, प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो गया राइट, तो ये हो जाएगा -2, ये प्लस, ये गड़बड़ था, ओके, -2 प्लस राइट, मुझसे गड़बड़ हुई थी उस टाइम पे, -2 प्लस, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, बस, लेट्स सी, ये हमने कुछ चीज़ मिस करी नहीं, क्लोज करना भूल गए किसी चीज़ को हम, क्या भूल रहे थे क्लोज करना, let's see, shifted into row plus into column +1 less than this into column less than equal to 2y minus 2 into column 1 less than equal to this, and then ये ऐसे हमने किसी को कुछ चीज़ बंद नहीं करी है, ओके, प्लस 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 प्लस, इसलिए नीचे, नीचे, okay, here is the issue, what is the issue sir, r minus 2 is it, ये दिख रहा है क्या, ओके, फिर हम स्पेस प्रिंट करने थे ना, उसके लिए दिक्कत है, टू, ओ ओके, it's a 2 row, yeah, 2 into row right, we just did what we wrote, 2 into row, yeah it is good, let's go to next question, ये थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ट्रिकी है, ओके, ओके फाइन, दिस इज द क्वेश्चन, ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी हम इसको फर्स्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर एक पार्ट करेंगे ये वाला बीच वाला, फिर एक नेक्स्ट वाला पार्ट, थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट जीरोस का, तो फर्स्ट जीरो का, फिर 1 यहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड पार्ट, और फिर यहाँ से नीचे 2 से लेके 2 3 4 5 और यहाँ तक ये थर्ड पार्ट, और ये फिर फोर्थ पार्ट, ओके फाइन,
इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना अ, थोड़ा न्यू चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। अब हमें थोड़ा पैटर्न समझना पड़ेगा। ओके, पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि आप देखोगे कि जो सेकंड वाला है, इसमें आप देखोगे वैल्यूज़ 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9 बढ़ रही है, राइट? और जो आपका थर्ड वाला है 2, 4, 3, 6, 5, 4, 9, 8, 7, 6, 5, यहाँ पे कम हो रही है। तो ये पैटर्न है जो इस क्वेश्चन में सब काम आएगा। तो उसको सॉल्व करने का कैसे करेंगे हम? तो फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न और जीरोस भी तो है, राइट? जीरोस और लास्ट में सेकंड जीरोस। जब फर्स्ट रो है तो कितने जीरो हैं? 4 जीरो है, राइट? और पैटर्न क्या है? पैटर्न को हम एक काम करते हैं, इसको हम व्हाट वी कैन डू इज, इसको हम 1 लेते हैं, इसको एक एरे में लेते हैं। ओके, समझने के लिए इसको एक एरे में लेते हैं। इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसका एरे होगा 1, तो स्टार्टिंग और एंडिंग। ओके, इस तरह करेंगे, स्टार्टिंग 1 से और एंडिंग 2 से, एंडिंग भी 1 से ही है, राइट? फिर इसमें क्या है? कुछ है ही नहीं है, लीगली नहीं है। और इसमें क्या है? इसमें वापस 4 है। सेकंड मानते हैं, इसकी वैल्यू 3 हो गई। अब इसका फर्स्ट स्टार्टिंग से हो रही है 2 से और 3 से। ओके, 3 तक इसकी कितनी हो रही है? 2 से, और एंडिंग भी 2 से हो रही है। ओके, 4 और इसका कितना है? 3 हो गया। 3 के केस में ये 2 स्टार प्रिंट कर दें। स्टार्टिंग कितने में हो रही है? 3 से कहाँ तक हो रही है? 5 तक। इसकी कितनी हो रही है? 4 से 3 तक। इसकी कितनी, यहाँ पे कितने हैं? 2 है। 4 के केस में क्या हो रहा है? ये 1 है। ओके, यहाँ तक कितनी हो रही है? 4 से लेके कहाँ तक हो रहा है? 7 तक। और फिर यहाँ पे कितना हो रहा है? ये हो रहा है 6 से लेके 4 तक। यहाँ पे कितने हो गए? 1 हो गए। फिफ्थ सिनेरियो में स्टार 0 हो गए। तो ये कितना हो गया? 5 से लेके 9 तक। और यहाँ पे कितना हो गया? 8 से लेके 5 तक। ये कितना होगा? 0। ओके, अब लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। 0 के लिए क्या है? 0 के लिए क्या है? 0 के लिए हम कह सकते हैं रो प्लस 0 इक्वल टू n। तो 0 कितना हुआ? n माइनस रो, ठीक है? दोनों 0 के लिए n माइनस रो। अब हम क्या करेंगे? एक रेंज प्रिंट करेंगे। ओके, तो रेंज प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बताइए? रेंज प्रिंट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अब इसमें कुछ दिख रहा है हमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जो फर्स्ट है उसकी जो रेंज है वो है रो कॉमा, अब यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है 1 3 5 7 9। बताइए, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 2 इंटू रो, 2 इंटू रो, 2 इंटू रो माइनस रो है, या माइनस 1 है। क्या बोल सकते हैं इसे? कैसे? 2 इंटू 1, 2 इंटू रो, 2 इंटू 1 माइनस 1 1 होता है। 2 इंटू 2 माइनस 1 3 होता है। 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5 होता है, ठीक है? अब आते हैं सेकेंड में। इसका पहला क्या है? 2 4 6 8। ये क्या है? पहला इग्नोर मार सकते हैं, बस यहाँ से 2 4 6 8 ये क्या है? कुछ आ रहा है समझ? और ये भी देखा जाए तो 2 इंटू, ये -2 होगा। ये -2 करना है इसमें, राइट? 2 इंटू रो -2 करना है इसमें।
2 into रो माइनस टू, ओके, कॉमा 2 3 4 5 6, ये सेम टू सेम रो, राइट। तो बस अब यही है हमारा क्वेश्चन, यही था जो हमें चाहिए था। अब उसके बाद प्रिंट करना है। आया समझ, राइट, व्हाट आई मीन टू से। लेट मी शो यू हाउ टू सॉल्व। इन तीनों चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं। फॉर इंट रो इज इक्वल टू 1, रो लेस देन इक्वल टू n, रो प्लस प्लस। आते हैं अब पहले हमें क्या करना है, जीरो प्रिंट करना है। फॉर इंट कॉलम इक्वल टू 1, कॉलम लेस देन इक्वल टू n माइनस रो, n यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, कॉलम प्लस प्लस, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, प्रिंट क्या प्रिंट करना है, जीरो, राइट, जीरो। और सेम हमें एंड में प्रिंट करना है, राइट। अब आते हैं ओके, अब आते हैं बीच वाले के लिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टार्टिंग रेंज क्या थी हमारी, फर्स्ट ले रो से थी, और कहाँ तक जाएगी ये, 2 इंटू रो माइनस वन, राइट। तो ये 2 इंटू रो माइनस वन, और इसमें हम क्या प्रिंट करेंगे, जो हमारी कॉलम। फिर आते हैं नेक्स्ट के लिए, इसकी रेंज क्या थी, 2 इंटू रो, 2 इंटू रो, राइट। और ये कहाँ तक जाएगी हमारी रेंज, रो तक। अब आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसमें कॉलम प्लस नहीं होगा, इसमें माइनस होगा, और यहाँ पे हम कॉलम को प्रिंट करेंगे, और लास्ट में हर लाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। लेट्स सी। ओके, सेकेंड, there will be a space to space, 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 something we have missed. Column is equal to, oh, 2 are minus 2 na, we have missed this, man. It's loading, it's compiling, let's see. Taking time than usual. Load bro. Okay, time limit exceeded, it's saying. Huh? Why it is time limit exceeding, column 2 are minus 2, column minus 2, column less than equal to minus 1, column 1, this again, equal to n, 2 plus plus, and here we are okay, 2 into this one, into, under this 1, so let me
welded this again. Mm-hmm. Yes, let's see what's there. If there's some issues, we'll get to know. But surely there must be a syntax issue for it. It's loading. Let's see. Okay. So here it is saying that the loop is correctly made by adding leading zeros. Okay. And here also it is saying that loop condition is incorrect. This is what incorrect loop. What incorrect here? Hmm. Okay. Okay. And okay, let's compare. Okay. This is the below one I've checked earlier. Okay. In my notes for one plus plus. This is fine. This looks fine. Then k is equal to I. K is less than 2 into I minus 1. K plus plus smaller than. Yeah, that's fine. Then k. Then we have L equal 2 into I minus 2. Okay, what I think is we have to change the elements. Okay, let's make it 1, 1, 1, 1. Or not like this. Double N. Okay, double N, double N, double N. L, L, L. Okay, let's see. Space, space. Let's see. Loading, it's compiling. Okay. Then what we have to m equal to 1, m less than n minus 2, I is 0, right? M plus plus. Then here L equal to 2 into I minus 2 minus 2 equal to I L minus minus plus N. Yeah, it's fine. Mm, let's see, let's see. Checking the reference correct.
is okay. We got the issue. Quality issue. So when we are decreasing it, it should be more than equal to zero. Okay, this was the issue. Now it will work. It should be more than, not less than, more than equal. Okay. Now come to the next question. Now it's simple volume print. We have print is fine. I think this we have already done it, so you must be aware how to solve it, right? But still we will be solving it with pen. Okay. So it is divided into two parts. Okay, you can say first is spaces and second is the star. First row space. How many spaces are there? Uh, one. How many spaces are there? Initially, let me draw it. Else we will be able to see the space. Oh, okay. Four, another three, two, four. Oh, okay. It is not overlapping basically. What is it? Okay. So how to solve it? So what we can do is here to make it feasible. Uh, let me think. Let's think of it. Okay, how can we solve it? I'm also the first thing. Uh, let's go. So star, 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 star. So star space 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 space. Okay, fine. That's all. So how I can see it is first is this, second is this, third we can see third loop. How can we see third loop is also there. And then there's a fourth loop. Okay. Hmm.
in third loop, alternatively we are printing star. Okay, I think it will be the same question what we solved before. Okay, these three were the factors, right? For this question. So I think for this question also, these three will be the only factors. So what we have to do is copy that last question. Okay. Okay. Let's solve it. Okay. So basically, here first of all we don't have to print. We have to print spaces, right? Spaces. And here what we'll do is, if okay, it is same like last. We are dividing this space, and then this space. Okay. What we will do is, if column modulus uh, modulus 2 is equal to, if it is odd, okay, then that time we will be printing star. System dot out dot print ln star. I'm just giving a try. Okay. uh, Star, else we will be printing the space. Same way for this one. So here, if it is odd, still else we will be printing no, it will be like, if okay, if it is odd, that time we'll be printing star else this. And here, if it is odd, what we will do is, we need to give it as whole, right? We need to give it this amount. If it is let me think. We can find it. Let me check in two loops. Is it possible or not? Okay. Two loops means three, five, 7, 9. Okay. So what I'm telling is, here you will see when space is how much? 4. Okay. Star we can count 1. Then in 2, space are 3. And the stars are 3. Then 3. Then 5. Right now I'm taking whole as star. Okay. Later on we will divide it. Then 4. Sorry, this is 2. 2, 1. And this is 3. This is 7. Oh, it's 5. And then for 5 is 0 and it is 9. So for n, it is clearly n minus 1
Okay, n minus row. And for this we can say 2 into row minus 1, 2 into row minus 1. Okay, 2 into row minus 1, it is 2 into row minus 1. Okay, now we can say if column is position is e position is odd, when the position is odd, right, column, and we will start from 1. Okay, so when the position is odd, that time we are printing star, and when the position is even, that time we are printing spaces. Fine. Let's see. Or vice versa. This one, let's see. Relation. Mm, oh, we are having two columns. Let's see. Why do only one column? Let's see. Let's see. 14 1 equal to 1, go into row minus 1, right? Yes. Or you can say space is equal to you can say space plus star is equal to n, right? So space is equal to n minus star. Space is n in terms of n minus row, n minus row, right? N minus row is fine. N minus row is fine. Yes. And it is also fine. 2 into r minus r is equal to r star. How is it like this? Then r was 1, 8, 3, 5, 7, 9. Yes. So this thing. So I have to do one. The regression campus is fine. That time we are printing is equal to rho minus minus 1. That's fine. Into column 2 into I plus plus. So this is fine. The only thing is how they are getting rho minus 1. Row 2 into row. 2 into row, according to them, the first value is always
Okay, they are taking extra space also. And then every time when it is odd, okay, this output will be always with the extra space. Okay, yes. So when the output will be there will be extra space here after that. This, if we take one, okay. Else I was thinking that why it's not taking. If we take what we discussed, right? The first value is having 1 star, then 3 star, 5, 7. So when it is a or either बार आप फॉर्मूलाज होता है let me check. So basically spaces formed as like row plus space is equal to n. So space equal to n minus row. Okay. Now star formula, space plus star is equal to not space plus star. There's no okay. Space plus row equal to n, right? So space, so uh, we have to check with the range of star. Okay, this is the star we have to check. So we can say that 3367 space plus star is equal to uh, whichever relation. If we start, or we can say 2 into row minus 1 is always equal to star. You can say it. So 2 into 2 minus 1, 2 into 2 4 minus 1, 2 into 6 minus 1 4. Yes, star is always equal to 2 into row minus 1. So this should be working nicely. Check the where it is from. Oh, our output is actually correct. Our output is actually correct. It is in the response. It wants a space. That's why it is failing. Okay, fine. We are good. We are fine. Okay, great. If you are till here, it's fine. It's good. Okay, let's go to next set of questions. Great. We were we were actually right. So the question which we solved right now, na, it was you can say lead code question. Okay, in lead code also we will be solving once we are familiar with this coding. That time we will be solving lead code also. Okay, let's go. Okay, next question here is this. This is the pattern which we have to print. Okay, so it is like uh, take an integer n as an input, print the following of n lines. Okay, for if n is equal to 5, there will be 1 2 3 4 5 lines. Okay, first five first line has 5 blank spaces. Okay, between the stars, and second line have 4. So let's go ahead. 2 3 4 5. You can also do. Okay, 1 2 3 4 2 3 1. So
So we will be drawing a line. Okay. So always first and last will have a okay star. Okay. And the logic behind, and we have to find a logic between spaces. Okay. So how to find a logic between spaces? Simple thing. Let's do it. When row is and space. When row is 1, space are 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. What relation? Space is always space, basically row plus space equal to n plus 1. Always. So space equal to n plus 1 minus row. Okay, so simple. It's the simplest question. System dot out dot print. First we have to directly print star in every time, right? Then for let's copy it for int int column is equal to 1, column less than equal to n plus 1 minus minus row column plus. Okay, and here we have system out print space, and then again we have to print a star, and then it is a part of row, right? Row also we have to print row, and it will be going with n, and then we have to system dot out dot net, then let's see, there's some mm, this model. Okay? Cannot find symbol int column equal to what's symbol column COLM probe. Okay, let's see. Okay, fine. Okay, guys, you can take a small break. It is working fine. Okay, if you are till here, so we will back in few minutes. Okay. And
ओके, सो वेलकम गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ओके, सो ये वाला क्वेश्चन एक क्लासिकल क्वेश्चन है जो कि बहुत टफ में कैटेगरी में आता है, हार्ड ही कैटेगरी में आता है। ओके, इफ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन देन श्योरली वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पैटर्न। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कुछ पैटर्न जो आपको हमें समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है कि इसमें यू कैन सी हेयर कि सॉरी, हाँ, वी कैन सी हेयर कि अ, क्या क्या वी कैन सी, इसको थोड़ा लाइन करता हूँ नोटपैड को। ओके, इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ से इसको फर्स्ट जीरोज आ रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे, लास्ट में जीरोज हैं, और बीच में 5, 4, 8, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 2। तो इसमें ये 1 के फैक्टर्स हैं, ये 2 के फैक्टर्स है, 3 के, 4 के, 5 के। ओके, तो काउंट और उसके बाद काउंट आते हैं। काउंट कितना है? फर्स्ट में 1। काउंट मतलब कि कितने मल्टीपल्स हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो एक रो बन रहा है, रो जीरोज भी है इसमें। फिर काउंट कितना है और मल्टीपल कितने हैं, और फिर उसके बाद जीरोस को तो हम वापस जीरो। फर्स्ट रो में कितने जीरो हैं? 4 जीरो है। काउंट कितना है? एक काउंट है, मल्टीपल कौन सा है? 5 के मल्टीपल है, और ये वापस 4। फिर सेकंड में 3, काउंट कितने हैं? 3, मल्टीपल कौन सा है इस बार? 4 का, और इसमें कितने हैं? 3। थर्ड रो में 2 जीरोज हैं, काउंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 काउंट है, और मल्टीपल 3 का, और इसमें कितना है? ये भी 2 है। 4 में 1, और कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7
मल्टीपल 2 का है और फिर 1, 5 लास्ट रो में 0, 9, 1 का मल्टीपल और 0। ओके, लास्ट क्वेश्चन से फॉर लूप कॉपी कर लेता हूँ, इट विल बी फार इजी फॉर अस ऑल। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो अब आते हैं इस पे जीरोस के लिए। अब पहले जीरो निकालना है। जीरो का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, n प्लस वन, और वी कैन से रो प्लस जीरो इज इक्वल टू n, राइट? So 0 equal to n minus rho, n minus rho. Fine, it is n minus rho, n minus rho, and that time we have to print what? We have to print zeros. Then next loop, uh, next loop is, so in next loop we have to print the multiples, right? So it will be, first we have to check multiple. So for multiple you can see, or how many times we have to run the loops, count. Okay, so it will be 2 into row minus 1, 2 into row minus 1, so it will be 2 into row minus 1. Fine, right? And here we have to, what we have to print, tell me? Multiples, right? So multiple will be column multiply by multiple. So any formula for multiple, so it will be 5 plus 1 6, right? So we can say uh, row plus multiple is equal to n plus 1. So multiple will be n plus 1 minus row. So it will be n plus 1 minus row, right? N plus 1 minus row. So with the help of this we will get the multiple, and we have to just print it. Let's see. Uh, my I think some minor edge case we have missed. Zeros we have. Uh, so for zero, what is the issue? It is like we are printing 0, 0 to n minus row, column plus plus zeros, and then we have column plus 2 into row minus 1, column plus plus, and then we have this count into n minus n plus 1 minus 1. That is also fine. I think our space space also. Okay. So very silly mistake surely we have made. Okay, uh, I knew we made a very silly mistake. We didn't printed the end zeros, right? End zeros also we have to maintain, right? It's fine. Okay, guys. So come, let's go to next question. Okay. So this time it is a question which is like this. Okay.
So what we can do is, I think we can divide it into two parts. One is the upper and second is the lower. Okay. How to do it? Let's find out, guys. Okay. So take an integer n as an input, and we have two corresponding half diamond we have. Okay. Hello. 10 मिनट हो गया. Okay. And we have to print take an integer print corresponding to half diamond pattern with 2 into. Okay, 2 into n minus 1. For example, 5, the pattern will be like this: 1, 2 into 1, 2 into n. 2 into n, how much it is? Uh, 10 minus 1, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so, okay, fine. So, how we will solve it? Let's see. Um, uh, let's see any pattern we can find. So what I can think of it is, we will divide this thing in one part and this low part in the same part. Okay. So what we can do is low star and then second okay star. When one is a low, then one, two, then there's two, then three, there's three, then four, they are four star, then five, they are five star. 6 they are 4 star, 7 they are 3 star, 8 they are 2 star, and 9 they are 1 star. Till here the we can understand it, okay? It is clear what the need is. But after that, first let's loop this thing, okay? First, let me copy a loop from uh, previous window. Okay, so till I equal to n we have to go, right? So okay, till I equal to, you can say what, I equal to n, right? Till I equal to n, it is like uh, row itself, okay? Row itself, row itself. So, and we have to print directly star. Fine. Then what about other? Then when it is n plus 1, right? Sixth, basically n plus 1 till how much? Till m. We are using, right? Till m. Hmm. It is till n. After m, what is the logic? We have to find 6 plus 4. It is like uh, row plus column, row plus star equal to 2n. Star equal to 2n minus row. Okay, so it is like uh, 2 into n minus row, and then that time also we have to print this. Let's see. n n plus 1. Yes, it is working fine. Yeah, we were fine. So okay, let's go to last question for today, and let's see. Okay, guys. So this is also a pattern question which we solved earlier. Diamond question.
This time it is reverse time. Okay, so let's see. So same way like we did it last time. Let's draw it again in your uh, system. Okay, star, star, space, star, space, star, space, star, space, star. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, right. Then star, space, star, space, star, space, star. Then star, space, star, space, star, then star, space, star, and star. Okay, let's start. So it will be divided into two parts. First part will be till here, this empty space, and then it will be star. Okay, so row, space, and star. When it is first row, how many space are there? There are zero space. And how many star are there? One, two, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Or you can say, uh, we can say that they are 1, 10. Okay, because they count 10. Uh, 2. Then there are how many spaces? One space is there, and how many star? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 3. There are how many star space? 2, and then there is 6. Then then 4. They are 3, and they are 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, when it is 5, that time there are 4 and there are 2. Okay, let's code it then. It's kind of simple question. Okay, let's do it. So, uh, first you want find the spaces. What is the formula spaces? 2 into rho minus 1, right? Or something. Rho minus 1. It is basically rho minus 1, right? So, it is rho minus 1. Rho minus 1. And that time we have this and space. Then there is second. What is the formula for it? It is uh, it is like rho plus star equal to rho plus star or something. What could be the formula? Mm, let's think of it. Think of it. 10, uh, 10, 9, 8, 7. Or we can say 2 into n. 2 into n. 10. 10 minus rho 10 minus 2r 10 plus 2r minus 1, right? So 2n minus 2r minus 1. Is it like this? For example, 2 n is 10. 10 minus 4, 8, right? No. Is like 10. Mm, yes, yes. Oh, let's think. What can be the relation between these things? Uh, 5, 6, 5, 11. 9. Okay, it's simple. We got it. So basically, row plus space plus star is always 2n plus 1. Okay. Yes. So
So, we have what we have space. We have right. First, uh, space is equal to rho minus one. Then rho plus space plus star equal 2n plus 1. Then we can say that 2 into 2 rho minus 1 equal to 2n plus 1. So star equal to 2n plus 1 plus 1 minus 2 rho. That is 2 into n minus 2 into rho plus 2. So is the formula. The formula is, let's see, 2 into n minus 2 into rho plus 2. Okay, and if column modulus 2 is equal to, so if it is odd 1, that time we'll be printing system dot out print star, right? Else we will be printing system dot out print space. Let's see. I think so. Okay, let's see. Something is wrong. We are printing. Are we printing this? We have to just print a space. Okay, something is wrong. Uh, 1 is equal to, are you sure what space? Space is space. Space is always rho minus 1, right? Yes. Rho into n. Yeah, it is fine. Yeah, that's it. Okay, let's see. We did it earlier also. Let's compare. Into 1 n, okay, fine. J plus 1 rho minus 1 j plus plus is fine. K is equal to 1, column is equal to 2 into n minus 2 into rho plus 2. Yes, it's fine. K plus plus, then column space. Okay, I think this was the only thing what appears. There was extra space which we are giving the principal. No. This is equal to n rho plus plus in j column to 1. Column is less than equal to rho minus 1. Fine. Column plus plus not into space. For int for column 1 equal to column 2 into rho. 2 into n. 2 into n. That's plus 2 plus 2 minus 2 into rho plus kk. If column modulus 2 is equal to 1, that time we are printing star is, and then system will print element. Though it is everything is same.
इशू है और int n और function is returning extra space. Extra space. What could be the issue? Tell me. Why we are printing two for loops? This is the question. Why? We just copy pasted the old question, so that's why copy pasted. Okay guys. So uh, अगर आप यहाँ तक पहुँच लिए, आपने यहाँ तक क्वेश्चन सारे कर लिए, तो surely you are expert in the patterns. Okay, these were the advanced questions which can be asked in any interview, or if you are doing a if you are in college also, if there is exam, semester exam or something, यही आपके patterns आने वाले हैं. इसके अलावा कुछ नहीं आना. If you have seen last two videos and this one which I will be uploading, so surely you will master it. और मैंने नोटपैड की हेल्प से समझाया, तो आपको समझ भी आ गया होगा कैसे स्टार लेना है, क्या स्पेस लेना है, क्या फॉर्मूलाज होते हैं. तो ओके, हाँ मैं सुना देता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन. इसमें व्हाट आई हैव डन इज, इफ यू कैन सी रो प्लस स्पेस प्लस स्टार की वैल्यू हमेशा 11 आ रही है. तो 11 क्या है, 2n+1. तो रो की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, और रो है, और स्पेस की वैल्यू हमने निकाली थी, रो -1 और प्लस स्टार इक्वल टू 2n+1. अब बस आप स्टार को छोड़कर सब कुछ उधर ले जाओ, और इन दी एंड यू विल गेट 2 × n+2 इंटू रो. दिस इज वॉट यू विल गेट. तो इसी तरह मैंने सॉल्व किया. सो इफ़ यू आर विद मी टिल हेयर, आपको ये पसंद आई वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू गाइज अ लॉट.